नमस्ते और हेल्थ फॉर यू चैनल बाय यूबी मीडिया पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अदिति जैन, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन, और आज हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। कैंसर पेन इज अ पार्ट ऑफ कैंसर associated in patients. It is affecting these patients severely, both emotionally, mentally, and physically. This cancer pain can be due to chemotherapy, radiation therapy, surgery के बाद का pain, या even because of the disease itself. Now, pain physicians worldwide and even oncologists are well aware of the need to treat this pain adequately. लेकिन इसके बावजूद आधे से ज़्यादा कैंसर पेन के मरीज आज भी inadequate पेन कंट्रोल के साथ जी रहे हैं, and almost a quarter of them are actually dying due to the pain. इसको हम कैसे ट्रीट करें? As physicians, ये हमारा फर्ज है that we see to these patients and try to treat the pain to the best of our abilities. Though the complete cure for various forms of cancer is still not available and is still ongoing, at least we can look after the pain part of these patients and try to give them a better quality of life. Now let's talk about how do we treat it. अगर हमारे यहाँ एक मरीज आता है कैंसर का पेन के साथ, so there are different steps how we treat them. WHO has identified a 5-step ladder in treating these patients. अगर आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, we will start off with weak and non-opioid analgesics जैसे कि over the counter paracetamol, crocin, aspirin. Along with, it's important to remember, these patients require continuous psychological support or psychotherapy along with other adjuvant therapies which are available like acupressure. Acupressure has proven to be very useful in cancer pain patients. Now, a lot of these cancer patients do not get treated adequately with only over-the-counter pain medicines. Now, when you come again, we will take a step above, that is weak opioid medications like tramadol. This is given in adjuvant to other therapies like the psychotherapies, the psychological counseling, and acupressure and physiotherapy, etc. अगर इससे भी आपका दर्द कम नहीं होता है तो हम जाते हैं एक स्टेप ऊपर, which is stronger opioids like morphine. Now, stronger opioids are very effective in treating cancer-related pain, but हमारी सोसाइटी में there is a disadvantage to it because a lot of people think that it creates a lot of physical dependency and addiction. But studies have shown that these opioids do not have these two problems in cancer-related pain. Though there can be severe negative side effects to some of the patients, इस चीज़ को काउंटरएक्ट करने के लिए हम करते हैं इंटरवेंशनल पेन थेरेपीज फॉर कैंसर पेन मैनेजमेंट। अब ये इंटरवेंशनल पेन थेरेपीज क्या होती हैं? इसमें बहुत तरह के ब्लॉक्स आते हैं जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, सीलियाक प्लेक्सस नर्व ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स जैसे अगर आप पैनक्रियाटिक पेन से पीड़ित हैं या फिर आपको स्पाइन में बहुत पेन है, these blocks are very effective in counteracting that pain without the side effects of strong opioids like nausea, physical dependence or even addiction. तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि आप पेन फिजिशियन या आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसका सुने और एक लैडर वाइज अपने को पूरे ट्रीटमेंट लेने रहेंगे. There is no dearth of medication, there is no dearth of interventions that can be done to remove your pain. What is required is awareness, so societal awareness. कैंसर का ट्रीटमेंट एक अपनी जगह है, लेकिन उसकी जो दर्द है, जिस पीड़ा से वो इंसान गुजर रहा है, उसको कम करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो हम उसको देना चाहिए. Especially if the life expectancy is more than 6 months or more than a year, you will not let that patient remain in that pain just because he has a malignancy. In the end, it is very important to remember that each and every patient has a right for his pain
to be acknowledged and a right for somebody to assess that pain and manage it properly. दर्द सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन उस दर्द के साथ रहना अनिवार्य नहीं है. Thank you very much, and for more such informative videos, please like and subscribe Health for You and UB Media. Thank you.